So hello students, now in this video we're going to discuss about alcoholic liver diseases. Alcoholic liver disease. Okay, now generally what is the etiology? Alcohol consumption is the main cause of alcoholic liver disease. Alcohol consumption. Now see, if a person drinks 60 gram alcohol per day for continuously for 10 to 15 years, then you gonna see what? That is fatty liver. You will see fatty liver development in this patient. If the alcohol intake is 160 gram per day for 10 to 15 years, then this person can develop what? Hepatitis infection. Then this person can develop hepatitis. Okay. Now there are 3 stages of this alcoholic liver diseases. So what are these 3 stages? The first stage is the fatty liver or steatosis. Fatty liver or steatosis. Second is alcoholic hepatitis. पहले फैटी लीवर होगा इस पेशेंट में, देन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और फाइनली हेपेटाइटिस के बाद क्या होगा? सिरोसिस विल बी देयर. अल्कोहलिक सिरोसिस. ओके. नाउ in case of this alcoholic hepatitis, what you gonna see here? Even though it is a chronic process, but still यहाँ पे किसका level increase होगा? Neutrophils का. Neutrophils are increased here. Okay. Second thing you gonna see here, Mallory tank bodies. Mallory tank bodies. Now where else you gonna see this Mallory tank bodies? For differential diagnosis, just remember one mnemonic, and that is MATIC. MATIC से आप याद रख सकते हो Mallory tank bodies के differential diagnosis. So first, M stands for the metastatic disease of liver. Repeat. M stands for metabolic disease of liver, जैसे कि विल्सन्स डिजीज. ओके. सेकेंड इज हियर A stands for alcoholic liver disease. Second is non-alcoholic fatty liver disease. Non-alcoholic fatty liver disease. T stands for alpha-1 antitrypsin deficiency. So here I stands for Indian childhood cirrhosis. C stands for cholangitis. Now this alcoholic cirrhosis, also called as Liniac cirrhosis. Okay. Now this alcoholic cirrhosis अगर ये हो गई किसी पेशेंट में, तो this is what? This is a irreversible condition. Irreversible. Okay. And here आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं हॉबनेल पैटर्न. हॉबनेल पैटर्न is present in alcoholic cirrhosis, and generally यहाँ पे क्या होगा? लिवर की श्रिंकेज हो जाएगी. What is gonna happen? There is here you gonna see liver shrinkage. Now
What are the clinical features of these alcoholic liver diseases? So first clinical symptom here is the right upper quadrant pain. Second, here you're gonna see jaundice. Third one is in a later stage, this alcoholic liver disease can progress into cirrhosis. In later stage, this can progress into cirrhosis, and finally, cirrhosis can lead to एंड स्टेज लिवर डैमेज, जिसके कॉम्प्लिकेशन आपको याद थे, क्या पढ़े थे हमने, दैट इज पेस. सो यू गोना सी पेस हियर. ओके, नाउ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दिस alcoholic liver disease, first we will do LFT. First we're gonna do LFT. On LFT, what you gonna see, the enzymes are elevated. What enzymes are elevated? Here ALP level can be normal or increased, it depends, and the glucuronil transferase, it is also gonna increase. So this is the report of LFT. Out of these, AST is the best marker. AST is the best for alcoholic liver diseases. Now you know liver क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाएगा. तो अगर लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन्स है जैसे कि एल्ब्यूमिन है उसकी सिंथेसिस भी कम हो जाएगी. और क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर बनाता है, सो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो भी कम सिंथेसाइज होंगे, तो कोगुलोग्राम आपको डीअरेंज्ड मिलेगा. यहाँ पे जो कोगुलोग्राम है दिस इज डीअरेंज्ड हियर. Third, what you gonna see when you do the ultrasound sonography of this patient, there you can find there is a loss of liver texture. Loss of texture of liver. Okay? And जब आप KFT करोगे on kidney function test, what you gonna see, जो सीरम क्रिएट है ना उसकी वैल्यू और भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोसिस व्हाट वी जनरली डू, वी डू द बायोप्सी. वी विल डू लिवर बायोप्सी, और लिवर बायोप्सी पे आपको क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, द माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग व्हाट यू गोना गेट, दैट इज मेलोरी डेंक bodies. Okay, you're gonna see Mallory Dank bodies. Now how you gonna treat this patient? For treatment first हमें इसकी अल्कोहल को छुड़वाना है. ठीक है, first what we will do, alcohol de-addiction. अल्कोहल de-addiction करेंगे कैसे, by a use of naltrexone. Okay, naltrexone will use for alcohol de-addiction. What else you can use for alcoholic hepatitis? What you will give, prednisolone. Prednisolone. We will use prednisolone here. Now we'll discuss about the non-alcoholic fatty liver diseases. Non-alcoholic fatty liver disease. Okay, here in non-alcoholic fatty liver disease, what you gonna see here, hyperlipidemia is present. Hyperlipidemia is there. Second, obesity होगी. Third, there is less than 20 gram weekly alcohol intake. जर्नली नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में यहाँ पे जो डिजीज़ है वो अल्कोहल की वजह से नहीं है. इवन ये पेशेंट अल्कोहल ले भी नहीं रहा, और जर्नली अगर ले भी रहा तो इतना कम अल्कोहल से कभी भी फैटी लिवर डिजीज़ नहीं होगी. सो मेन रीज़न यहाँ पे मेनली हाइपरलिपिडीमिया या ओबेसिटी बोल सकते हो आप. ठीक है, नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ दिस नॉन एल्कोहलिक liver diseases? So first stage is the steatosis, that is fatty liver, steatosis. Second stage क्या है यहाँ पे, you gonna see non-alcoholic steatohepatitis. Second stage is non-alcoholic
steatohepatitis. Okay, here you don't see neutrophils. यहाँ पे आपको न्यूट्रोफिल्स नहीं देखने को मिलेंगे. हमने अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में बोला था न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे. क्या होगा? मैक्रोफेज प्रेजेंट होंगे. हियर मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट whereas neutrophils are absent. Okay, and this condition is completely reversible. It is completely reversible. Now we're going to discuss about the liver cirrhosis. Liver cirrhosis. So this is a irreversible damage of liver. Irreversible damage of liver. Now what is the etiology? Etiology of liver disease. Here main is the alcohol intake. Alcohol is the primary etiology. Second is hepatitis B or C can cause liver cirrhosis. Third one is the autoimmune hepatitis. Fourth one is the alpha-1 antitrypsin deficiency. Fifth is the alpha toxin. Alpha toxin. Sixth etiology is what? Wilson's disease. Seventh is the hemochromatosis. Hemochromatosis. So these are the etiology for the liver cirrhosis. Now see what is the pathophysiology here. Pathophysio. See, when a person is continuously taking alcohol, this will lead to the activation of macrophages. And this activated macrophages, they gonna secrete some inflammatory mediators like interleukin 1, interleukin 6 and platelet derived growth factor is released. So this gonna activate, these all things will activate the stellate cells. They will activate stellate cells. And you know stellate cells क्या हैं? They are the stellate cells are what? They are myofibroblast of the liver. और ये क्या करेंगे स्टिलेट सेल्स? यहाँ पे रिलीज होगा एक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा और यहाँ पे क्या होगी? डेपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी कोलेजन की. और मेनली कौन सा कोलेजन? टाइप 1 एंड टाइप 3. नॉर्मल कोलेजन क्या है? टाइप 4. बट यहाँ पे डेपोजिशन होगी टाइप 1 और टाइप 2 कोलेजन की, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो कॉन्टिन्यूस कोलेजन डेपोजिशन है, दिस विल लीड्स कैपिलराइजेशन ऑफ साइनोसॉइड्स. ओके, नाउ सी डेपोजिशन ऑफ कोलेजन, कौन सा वाला? टाइप 1 एंड टाइप 3, एंड दिस विल लीड्स टू व्हाट? कैपिलराइजेशन. This will leads to capitalization of sinusoids. See, sinusoids कैसे थे? ऐसे. और capillaries कैसी होती है? They are continuous. So this is abnormal thing for the liver. So capillarization of sinusoid, this is what? This is a hallmark feature of the liver cirrhosis. This is a hallmark feature of liver cirrhosis. Now see, this is the portal triad. Sinusoids, these are the stellate cells. Now here what is happened? ये जो साइनोसाइड थे इनकी कैपिलराइजेशन हो गई है. There is a capitalization of the sinusoids. Now कोई भी टॉक्सिन आएगा
वो यहाँ पे इन्होंने क्या करवा दिया, यहाँ पे आके इन्होंने कैपिलराइजेशन करवा दी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा एंड जो हेपेटोसाइट है यहाँ पे उनकी डेथ हो जाएगी. गॉट इट. नाउ सी, जर्नली दिस लिवर cirrhosis divided into two types. ठीक है, there are two types of liver cirrhosis, two types. क्या है, एंड ये डिवीजन जो है दिस इज बेस्ड ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन. फर्स्ट इज अ माइक्रोनोडुलर एंड सेकेंड वन इज अ मैक्रोनोडुलर. माइक्रोनोडुलर में क्या होता है, यहाँ पे जो नोड्यूल्स हैं, द साइज ऑफ नोड्यूल इज लेस देन 3 mm, वेयर एज इन केस ऑफ मैक्रोनोडुलर द साइज इज मोर देन 3 mm. Micronodular is mainly caused by alcohol. Macro is also caused by alcohol. Here, in case of macronodular, you're gonna see the alpha-1 antitrypsin activity is increased. Other thing, Wilson's disease also leads to macronodular type of liver cirrhosis. And here hemochromatosis leads to micronodular. This hemochromatosis leads to the micronodular liver cirrhosis. Even primary biliary cholangitis also causes this micronodular liver cirrhosis. Now, how a patient is gonna represent to your OPT? See, here you're gonna find the classical triad of a symptom. What is that? First is a cirrhosis will be present in the patient. Second, there is a nodules in the liver, and third one is bridging fibrosis is there. So this is a triad you're gonna see in this case. Now what are the clinical features? So clinical features में क्या क्या लिख के आएगा? First, here you will see, repeat, clinical feature depends if the case is compensated or not. So compensated के cases में, compensated लिवर cirrhosis के केस में व्हाट यू गोना सी, जो एसाइटिस है वो प्रेजेंट होगी कि नहीं, एज इट इज कंपनसेटेड, सो एसाइटिस इज एब्सेंट. इफ वी टॉक अबाउट द वेरिसेस क्यों होते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पोर्टल हाइपरटेंशन. सो अभी ये कंपनसेटेड केस है, सो ऑब्वियसली वेरिसेस विल बी एब्सेंट हियर. इफ वी टॉक अबाउट ब्लीडिंग, इज ब्लीडिंग प्रेजेंट और एब्सेंट? As it is compensated, so bleeding is also absent. Now in case of decompensated, is ascites will be present or not? Obviously ascites होगा. Varices होंगे कि नहीं? Obviously होगा, क्योंकि portal hypertension होगा. Then bleeding will also be there. Now see here, there is increase of estrogen, and because of increase of this estrogen, you are gonna see spider angioma. You're gonna see what? Spider angioma in the patient. Okay. Now, what are the diagnostic tests that you're gonna use here? The first one we always do LFT, liver function test will do. Here on the liver function test, what you can see, जो serum bilirubin है, उसके levels क्या होंगे? They will be increased. If we talk about SGOT क्या होगा? ये भी increase होगा. What about SGPT? Obviously ये भी क्या होगा? Increase, क्योंकि liver की पैथोलॉजी है. I've already told you, liver की पैथोलॉजी में जो भी enzymes वगैरह सब बड़ा होगा, ठीक है. And if we talk about the alkaline phosphate, उसके लेवल क्या होंगे? वो भी राइज होंगे. सो
LFT पे सब कुछ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा. नाउ व्हाट अबाउट द INR? As there is a lack of clotting factor, so you're gonna see the INR is increased or dearranged, you can say. Here the INR is dearranged. It is dearranged. This INR is dearranged. Okay. And if we talk about the albumin to globulin ratio, उसको क्या फर्क पड़ेगा? That will be dearranged also. क्योंकि देखो लिवर ही तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की सिंथेसिस करेगा. अगर लिवर ही प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? ऑब्वियसली सब कुछ डीअरेंज रहेगा. नाउ व्हेन यू डू द फाइब्रोस्कैन पे आपको फिब्रोसिस देखने को मिलेगी. यू कैन क्लियरली एप्रिशिएट द फिब्रोसिस. फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोसिस व्हाट वी विल डू? जर्नली वी डू द बायोप्सी. ठीक है, वी डू बायोप्सी. और यहाँ पे बायोप्सी पे आपको कोलेजन देखने को मिलेगा. कोलेजन विल बी देयर. और कोलेजन के लिए हम कौन सा स्टेन यूज कर रहे थे? दैट इज मेसन ट्राइक्रोम स्टेन. फॉर कोलेजन स्टेनिंग वी यूज मेसन ट्राइक्रोम stain. They can ask you question on the staining of collagen also. And second आप बायोप्सी पे क्या देखोगे? There is capillarization of sinusoids. There is capillarization of sinusoids. Okay. नाउ ये बायोप्सी आप कैसे करोगे? दिस इज अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर. ओके, सो दिस इज अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस फॉर द लिवर सिरोसिस. नाउ देयर इज वन स्कोर दैट यू नीड टू नो. हम जर्नली डायग्नोसिस पे स्कोर्स भी यूज़ करते हैं. कौन कौन से स्कोर्स आपने याद रखने हैं? फर्स्ट वन इज द मेल्ड स्कोर. यू नो ऑलरेडी. मेल्ड स्कोर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लिवर ट्रांसप्लांट के लिए. अगर हम बात करें सेकंड जो स्कोर यहाँ हम यूज़ करेंगे दैट इज चाइल्ड पुग स्कोर. चाइल्ड पुग स्कोर. दे हैव asked this question, what is child pug score, in the recent FMG exam. So just remember this child pug score. Here this child pug score will tell you the severity of cirrhosis. This will tell you severity of cirrhosis. Okay. Now चाइल्ड पुग स्कोर के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? फर्स्ट इज सीरम बिलिरुबिन. सेकेंड हियर इज वी चेक INR. थर्ड इज एसाइटिस. फोर्थ इज एस्ट्रिएक्सिस. फिफ्थ component here, fifth is the albumins. Okay, so just remember these components of the child pug score. And this MELD score, this will tell you about the severity or the mortality of cirrhosis. So MELD score में you have to remember CBI mnemonic. C stands for serum creatinine, B is for bilirubin, and I is for INR. If the child pug score is between 5 to 6, we called it as a compensated liver cirrhosis. Second, if the child pug score is between 7 to 9, we call it as decompensated liver cirrhosis. Okay, if it is more than that, then this case is very, very, very severe. Okay. Now, what is a complication of cirrhosis? Complication of cirrhosis. So, cirrhosis की वजह से क्या हो सकता है? First, अभी cirrhosis का मतलब क्या है? Generally, the normal liver tissue is replaced by some fibrous tissue. Here, you're gonna see the portal hypertension. Because of the fibrosis, there's a portal hypertension. Second is ascites. Third is peritonitis. Repeat, peritonitis.
peritonitis is there. Okay, so these are the complications that you're gonna see in case of cirrhosis. Now, if this patient is having the pulmonary hypertension, then now what is the investigation of choice for liver cirrhosis? So here we do Doppler ultrasound, Doppler USG. Okay, Doppler ultrasonography के बाद you can go for GI endoscopy, and GI endoscopy के बाद you can even go for sclerotherapy. Okay, sclerotherapy क्या है? This is a treatment of choice. So Doppler ultrasonography की by GI guided endoscopy, and then आपने treatment किया sclerotherapy के साथ. Now what are the other treatment tactics that you want to use here? First you will do fluid resuscitation. Second, even you can use these IV octreotides. Why we can use this IV octreotides? Because they will decrease the overload of the circulating fluid. They decrease overload of circulating fluid. तो varices के case में you can give this IV octreotide. Okay. Now the next topic of discussion is ascites. Ascites क्या है? It is an abnormal fluid collection in the peritoneal cavity. It is what? Abnormal fluid collection in peritoneal cavity. If ascites got worsen, so what you gonna see? In case of massive ascites, there are three features you gonna see, that is MRF. M stands for caput medusa. Caput medusa. R stands for respiratory failure. And F stands for fluid thrill. So these are the features of what? Massive ascites. And अगर still patient को treat नहीं किया तो symptoms और worse हो जाएंगे, and they will lead to what? They will lead to teniascitis. Teniascitis. What is this teniascitis? Repeat. This teniascitis, if still the patient is not treated, this will lead to abdominal compartment syndrome. Abdominal compartment syndrome. Okay. एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है? यहाँ पे जर्नली जो प्रेशर है एब्डोमिनल कैविटी में, दिस विल इंक्रीजेस, दैट विल बी मोर देन 25 mm ऑफ Hg. सो जब प्रेशर बढ़ जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में, रिपीट, जब प्रेशर बढ़ जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में तो क्या होगा? देयर इज कंप्रेशन ऑफ superior mesenteric vein and inferior mesenteric vein. Leads to compression of superior mesenteric vein and inferior mesenteric vein. And this will leads to what? This will leads to gangrene of intestine. This will leads to gangrene of repeat. This will leads to gangrene of intestine. Okay. Now how you gonna treat this patient with ascites? First we will do the salt restriction. Salt free diet लेने के लिए बोलेंगे. सोडियम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वाटर भी ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, तो इसलिए हम कम सॉल्ट वाली डाइट लेने को बोलते हैं. दूसरा, वी सजेस्ट, सेकेंड, वी विल गिव डायूरेटिक्स टू द पेशेंट.
आपको पता है डायूरेटिक्स क्या करेंगे, बॉडी में से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करवा देंगे, तो इसलिए हमने डायूरेटिक्स देंगे। थर्ड, यहाँ पे यू कैन गो फॉर पैरासिंथेसिस, लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस। लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस, या इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइटिस टैपिंग भी बोलते हैं। एसाइटिस टैप, हम अम्बिलिकल को पंचर करेंगे और सारा फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। बट सी, आपको एक ही बार में सारा फ्लूइड नहीं निकालना, बिकॉज अगर आपने एक ही बार में सारा फ्लूइड निकाला तो पेशेंट कैन गो इनटू शॉक। सो डोंट रिमूव फ्लूइड इन अ वन अटेम्प्ट, ओके, जस्ट गिव सम गैप एंड देन धीरे धीरे इसको रिमूव करना है। देन here what you gonna see, if this is a case of compensated ascites, then what you gonna do, compensated case है तो आपने इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ओके। अगर ये केस decompensated है, if this is a decompensated case, in this case we have to do the liver transplant, okay. Now we're going to discuss about hepatic tumors. Hepatic tumors. So the most common tumor of liver is what? It is secondary or metastatic tumor. Secondary or metastatic tumor is the most common tumor of liver. Now most common benign tumor, if they ask you, most common benign liver tumor, so what is your answer? That is hepatic adenoma. Hepatic adenoma, and second क्या है, hemangioma. Hemangioma, okay. If they ask you most common primary malignant tumor, malignant liver tumor, then what is your answer? That is hepatocellular carcinoma. Now we'll discuss about hepatic adenoma. दिस हेपेटिक एडिनोमा जनरली मेल टू फीमेल रेशो, इसमें ये जो हेपेटिक एडिनोमा है, अगर हम मेल टू फीमेल रेशो की बात करें तो इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, फीमेल्स में ये ज़्यादा मिलता है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो जनरली इट इन्वॉल्व्स 20 to 40 years of females. So what is the prognosis of hepatic adenoma? It is a good prognosis. It has good prognosis. Now what is the etiology for this? Now the next tumor that we're going to discuss is the hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma. It is also called as hepatoma. Got to repeat, it is also called as hepatoma. Now hepatocellular carcinoma, what is the male to female ratio here? It is generally 3:1. And if we talk about the fibrolamellar variant of this hepatocellular carcinoma, what you gonna find? Fibrolamellar variant. Here you can appreciate the male to female ratio is same, 1:1. And what is the most common age group involved in hepatocellular carcinoma? So generally it is seen in the old age people, 70 to 80 years wale, whereas fibrolamellar variant is generally present in younger age, 20 to 40 years. Now if we talk about the prognosis, in case of hepatocellular carcinoma, it has very poor prognosis. It has very poor prognosis, whereas fibrolamellar has a good prognosis. Now what is the marker for hepatocellular carcinoma? Here the markers is alpha fetoprotein, whereas for fibrolamellar variant, the
repeat. For the fibrolamellar variant, what is the marker? That is neurotensin. It is neurotensin. Here, which gene mutation is present in case of hepatocellular carcinoma? Here, there is a gene mutation of beta-catenin gene. And fibrolamellar में ये इसकी कोई gene mutation यहाँ पे नहीं होती है. Okay? And what stain you can use for staining the hepatocellular carcinoma? You can use Glypican in case of hepatocellular carcinoma, and यहाँ पे we don't use any stain. Okay. Now angiosarcoma of liver. Generally, this angiosarcoma is caused by 3 things you need to know. That is VAT. V is for vinyl chloride. A is for arsenic. And T is for thorostat. So this is all about the liver pathology. So thank you guys for watching this video.